The bus windows smashed to smithereens, the heavy police contingent, the down shutters. They tell a familiar story of a night when a mob went on the rampage after a man was shot dead in Shahpur market. The tinderbox of suppressed bitterness between two communities in Muzaffarnagar and Shamli districts needs just a spark. A meeting between Jat and Muslim leaders on 6th November is cancelled. The proposed meeting had raised hopes that there would be efforts to build peace between the two communities. In this vitiated atmosphere of fear and rumours, there is another not so familiar story, a story that is far more significant, of ordinary individuals who adopted a pro-peace agenda from day one, an agenda that needed extraordinary courage. Just 15 kilometers from Shahpur is Dulhera village with its Pradhan Sanjeev Kumar Baliya, who is a Jat. As always, his residence is a favourite spot for both Jats and Muslims who drop in for a chat and a cup of tea. Baliya is not married but says he has over 7,000 children, a number that matches the population of Dulhera village. Of them, 3,000 are Jats and 1,000 Muslims. 2 months ago, when a wave of sectarian violence began to engulf villages across Muzaffarnagar and Shamli, Baliya realized his village was vulnerable. A motorbike had been set afire by some outsider. 8 तारीख में सुबह करीबन 8 बजे से हमारे यहाँ कुटुंब में मार काट इन लोगों को याद किए तो कल ये आगे मारने के लिए कुटुंब में तो आदमी मार दिए थे वहाँ बहुत तो दहशत इनका आगे बहुत ज़्यादा तो हम 10-5 आदमी इकट्ठे हो गए और इन्हें सबको एक जगह इकट्ठे कर दिया भाई यहाँ बैठो आराम से माहौल शांत हो जाएगा अब अपने घर चले जाइए. On 8 September, 350 Muslims were given shelter in this space, which is part of a building owned by the Pradhan. Food was cooked right here for them. Similar arrangements were made in 4 houses, all belonging to Jat families. Through the day, the families stayed there. No one knew how the events would unfold. पर ये लोग कहले नहीं जी हमें कहीं सुरक्षित जगह छोड़ दो हम बहुत ज़्यादा डरे हैं हमें भी क्या सभी हो सकेगा एक आदमी में तो मर भी सके हार्ट अटैक हो जाए. Baliya took out his tractor trolley and drove those who wanted to go to the nearest relief camps. Over the next few days, he visited them at the camps to persuade them to return. Within a week, he brought them home in batches the same way that he had left them on his tractor trolley. प्रधान जी हमारे साथ थे, गांव वाले भी थे. जी हाँ, प्रधान जी के यहाँ रुके. हमारे दिमाग में तो एक बात है जिसने करा उन्होंने करा होगा इन हमारे वालों ने क्या करा जैसे इंसानी है ऐसे ही हमें जैसे गांव में पैदा ये उसी गांव में पैदा हम ही जहाँ खून इनका सही भरा है तो क्यों मार देना. उनके साथ पढ़े उनके साथ खाया खेले भी उन्हीं के साथ हैं आज भी इसी तरीके था. For Baliya, it has been a challenging task to maintain harmony. His only regret is that a few families have not yet returned. जब भी मैं भी तैयार हो जाऊँ हम भी जाऊँ वहाँ जाने कह रहे कि 2-1 दिन में आ जाएंगे माहौल शांत हो जाएगा फिर कहीं न कुछ हो जाए. In the Jat-dominated Kurana village in Shamli district, we meet Satinder Malik, an ex-serviceman and Delhi police constable. An injury on his leg brought him to his village to recuperate some months ago. Malik, who's a Jat, says the Muslim families in his village were poor and landless and worked as agricultural labor or looked after cattle for Jat families. शामली को देखते देखते हमारे जो गांव के मुस्लिम्स थे उनका भी मन अचानक जो मैंने रीड किया ये बना भाई यहाँ से चलो बाहर चले कैंपों में चले वहाँ चले इस तरह से. तो मैम उस दौरान में उनकी जो भावनाएं थी उनको बदलने की बहुत ज़रूरत थी. तो लोगों को समझा बुझा के जो बल्कि बस में बैठ गए थे यहाँ से 2-3 बसें भरी थी वो भी वापस उतर गए समझाने बुझाने से कि भाई साहब आप अपना घर मत छोड़ो बड़े प्यार से रहो यहाँ पे बहुत अमन चैन है. The proactive steps by residents help to maintain communal harmony in the village. बस ये तो बुजुर्गों की कुछ देन रही थी अन्य मतलब यूँ है जैसे आसपास को देहात में हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन हमारे गांव में बिल्कुल शांति से. But there were some young people who seemed to resent the initiative. कुछ नवयुवक एक दिन इकट्ठे भी हो गए थे कि वनु करना हो करना हमने उनकी बहुत समझाया भाई आपका भविष्य खराब हो जाएगा
आपको कहीं नौकरी पर जाना, किसी को बिजनेस करना। हमारी कम्युनिटी में जो बच्चे हमें दिखता था कि ये बच्चे हैं, इनको समझाने की आवश्यकता है या इनको डांटने की आवश्यकता है या इन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वो हमने किया, सबने मिलकर किया। Some days later, Satinder learned that an 18-year-old Muslim girl's marriage in his neighborhood was being cancelled. The family was fearful because tensions were so high. Satinder stepped in, offering to host the girl Anwari's marriage at his residence on 4th October. Anwari's family work as brick kiln workers. जी सतेंद्र बोल जी क्या लगा जी, ऐसा है मैं कर लूँ, मैं खर्च मैं का जी तुम कर लो, हम तो दहशत में थे। मतलब जो है जो सामान होकर लोन दिला इसका वो ने दिया। In Kurana village, a Jat Satinder Malik decided to send a strong message when he organized the marriage of a poor Muslim girl in his neighborhood. The symbolism of the event was significant. बोले आपने मुस्लिम लड़की की शादी क्यों की, आपको क्या मिला, क्या हिंदू लड़की नहीं थी, क्या हिंदुओं के अंदर बच्चियां नहीं है? मैंने बोला मेरे लिए तो हिंदू भी वही है, मुस्लिम भी वही है, मैंने तो आर्मी में नौकरी की है, सभी वर्ग, सभी जातियाँ, सभी धर्म की मैं इज्जत करता हूँ। जिस गांव में लाख में हुआ, बावड़ी में हुआ, जहाँ दो समुदाय भिड़े हैं, वहाँ ना चैन से वे हैं आज, ना वे हैं। कोई सा भी पक्ष चैन पूर्वक नहीं है, शांति से नहीं है। This spirit of humanity finds a resonance in the Muslim-dominated village of Basikala with its Pradhan Haji Mursalin. Of its 12,000-strong population, only 5% are Hindus. Most of the caste groups are represented here. There are no Jats, however. हमारे गांव में कोई असर नहीं हुआ उसका, ना हमने होने दिया है। हमारे गांव में सब जिम्मेदार लोग, जितने जिम्मेदार लोग थे, सब इनके भाइयों के पास घूमने आए। सब इन्हें कह गए भाई तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम बेफिक्र अपना गाँव में रहो, भाईचारा बना के रखो। It was 9 September. 350 Hindus who lived in the Muslim-dominated village of Basikala decided to leave their village and go to Kamalpura, which is Hindu-dominated. The Pradhan tried his best to persuade them that they were safe, but they were too traumatized and they left. वापिस आ वही 10-12 दिन बाद हम इन्हें वापस लिया जाकर वहाँ से। नहीं, हम खुद गांव वालों ने कहा भाई हमारे में हैं, हमारे गांव में रहते थे पहले, हिंदू भाई हैं, सब भाई आपस में भाई हैं सब, इन्हें वापस लाओ वहाँ से। हमारे गांव की हिमाकत हो रही है, हमारे गांव की तौहीन थी, अगर हम दूसरे गांव में जाकर रह रहे तो हम इन्हें वहाँ से भाईचारा बनाने के लिए अपने गांव में वापस लाए। The Pradhan's efforts to reach out to the community were backed by local policemen. कभी इधर गोली चल जाती, कभी इधर चल जाती, कभी इधर चल जाती। अब तो सब आ जी वहाँ से, अब तो बंद हो ही गया जी वो। पब्लिक ये नहीं चाहती कि हम ये पब्लिक में लड़ाई हो या नहीं हो, ये तो लोग नेता ही करवा रहे हैं लड़ाई इसमें। This sense of normalcy, however, eludes over 1,000 others who have sought refuge at the madrasa in his village. 2 months on, they are terrorized by the events they have witnessed in their villages. What's worse are reports that nearly 10 pradhans in the districts have FIRs lodged against them by victims. In nearby Taoli village, which too was the site of a relief camp for Muslims, there's a strong sense of amity among both communities. Of the population of 20,000, 75% are Muslims and 25% Hindus. Here too, there are no Jats. नहीं, कोई दहशत नहीं थी, सामान्य स्थिति थी, सब लोग मिलजुल कर रह रहे थे। यहाँ कोई बात पैदा नहीं हुई इस तरीके की कभी भी, जब से झगड़ा चल रहा है। Taoli village is barely 10 kilometers from Kutba and Kutbi villages, which witnessed extreme violence during the riots. Yet it did not prevent the Muslim villagers from giving protection to the small Hindu community in their village. Villagers started patrolling the streets so that no outsider could gain entry in the dark. The result, no Hindu family left the village, even temporarily. कोई दंगा नहीं हुआ यहाँ, ये लोग हम कुछ कहते ही नहीं, बेचारे बड़े प्रेम से रखा। बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ का, कोई ऐसा नहीं, काम करते हैं जैसे हम फील्ड वर्क भी। हम सबको एकजुट रहना चाहिए, जैसे कि हमारे गांव में व्यवस्था है ऐसी, अगर जो प्रत्येक गांव योगदान देवे तो इस कंडीशन को बहुत ही आराम से संभाल ले जाएगा।